Hello, am I audible? Can somebody confirm in the chat? Okay. Yeah, hi everyone. Hi Shilvam, hello Sachin. Good evening Akash. Okay, should we wait for another 2-3 minutes for people to join? Okay, so there are a lot of questions regarding is it possible to complete DSA journey in 30 days? So we'll talk about that as well. Don't worry. Yeah, I'm very sorry for the background noise. There's some construction going on. Genuinely sorry for that. All right, so till other people join, I'll give my introduction. Hello Ashish, hello everyone. So my name is Tripti Chaudhary and I'm a B.Tech undergraduate in Delhi Technological University and I'm pursuing computer engineering and I'm also an upcoming SD intern at Microsoft for summer 2022. So this was for my introduction. Okay. Yeah, I'll try to use both Hindi and English so that I can reach maximum audience. Yeah. Everybody asking that is it possible to learn DS in 30 days? We're gonna cater to that question as well, don't worry. So I guess enough people have joined. All right. So we'll just start now. So let's start with the very first question that is it possible to learn DSA in 30 days? I mean, it is a very vast topic. काफी सारी चीजें आती है DSA में. So how can one learn DSA in 30 days? So let me start with this point कि DSA जो है ना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो DSA को जितना टाइम दे सकते हो, लाइक नॉर्मली लोगों को 4 से 5 महीने लगते हैं. नॉर्मली इट टेक्स अराउंड मिनिमम ऑफ 4 to 5 months for people to learn DSA, practice DSA, and get used to solving problems using DSA. So that is the normal conventional thing. But if at all you are at a position where आपके interviews आ रहे हैं या फिर आपकी placements या internships आ रहे हैं, session आ रहा है, so in that case you have less time left. तो उस केस में अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है and you want to, so उसके लिए हम ये रोड मैप पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली देखो हर एक चीज टाइम लेती है, बट you can do something in 30 days कि कुछ नहीं करने से कुछ better है. Is it lagging? Yeah, so in this roadmap basically we'll be discussing कि 30 days में हम कितना अपनी साइड से अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं to learn as much as we can, to understand as much as we can. If you have time, I'll suggest कि definitely slowly and steadily do things. And if there is some kind of time constraint for you, so you can refer this roadmap. And apart from that, is it still lagging though? Just confirm me once. Is it lagging a lot? I'm waiting for your replies. Is it lagging a lot? Still lagging. Okay. I'll go slow so that you people can understand, even if it's lagging a little.
So yeah, and this roadmap, you can use this roadmap even if you want to revise DSA in a month or so. Then also you can use this roadmap not only for a person who's trying their hands first time on DSA. Even if you want to revise, you can still refer to it. All right, so should we start now? Should we start with the roadmap on how to learn DSA in 30 days? And while discussing the whole roadmap, I'll try to answer your questions as much as I can. So DSA related कोई भी problem हो, general query हो, आप पूछ लेना. Whenever I feel like कि I can, I'll answer. नहीं तो end में तो एक छोटा सा Q&A we will definitely take. All right, so I'll share my screen. Is it visible, everyone? Is the screen visible? All right, cool. ओके सो ठीक है 30 डेज में डीएसए करना है सो ऑब्वियसली थोड़ा सा चीजों को फास्ट लेके चलेंगे बट साइड बाय साइड स्लो भी लेके चलेंगे आई नो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है बट चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करना है इसलिए वी विल नॉट ट्राई टू डू बहुत ज्यादा वी ट्राई टू डू जितना इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस जितना हमको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या कोडिंग राउंड्स क्रैक करने के लिए जितना हमें चाहिए हम उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे सो डेज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं पूरे 30 डेज को ब्रेक डाउन करा है कुछ कुछ दिनों में कि कुछ कुछ टॉपिक्स को हमें 1 से 2 दिन लेने हैं कुछ को 1 दिन लेना है कुछ को 3 दिन भी लेना है सो ऐसे ब्रेक डाउन करा है एंड वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स सो इसके लिए हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि इफ इट ऑल यू वांट टू प्रैक्टिस अगर आप 30 डेज में कंप्लीट करना चाह रहे हो तो मिनिमम 2 आवर्स या 2 से 3 आवर्स पर डे तो आपको देना ही पड़ेगा बिकॉज अगर आपने बिल्कुल ही डीएसए नहीं करा है और आप 30 डेज में कुछ प्रेपरेशन करना चाह रहे हो फॉर योर मे बी प्लेसमेंट्स और फॉर योर इंटर्नशिप सो उसके लिए मिनिमम 2 to 3 आवर्स तो देना ही पड़ेगा एंड अगर उससे ज्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड बट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा और अगर आप रिविजन करना चाह रहे हो तो आई गेस 2 to 3 आवर्स इज इनफ काफी है अगर आप एक एक दिन में 2 घंटा पढ़ लेते हो या 3 घंटा पढ़ लेते हो फॉर रिविजन it's enough totally more than enough all right so in third year all right coding version sheet okay all right so now we'll start with the pura breakdown उसके बाद definitely I'll answer your queries so first of all हमारे पास है day 1 and day 2 इसमें we are gonna do 2 things एक तो अगर आप बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ चुके हो अगर आप बेसिक्स सारे कर चुके हो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कोई भी पिक कर ली है आप उसमें थोड़ा सा कोडिंग कर चुके हैं नाउ यू वांट टू स्विच टू डीएसए देन इन 2 दिनों में आप बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन कर सकते हो नहीं इफ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट जिसको बहुत ज्यादा अच्छे से कोडिंग नहीं आती है कभी थोड़ी बहुत पढ़ी थी बट आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो सो इन 2 दिन में सबसे पहले तो काम क्या करना है यू हैव टू पिक एनी लैंग्वेज अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज पिक करनी है सी प्लस प्लस हो गई जावा हो गई पाइथन हो गई हम कौन सी लैंग्वेज पिक करें सो उसके लिए सिंपल सा आंसर है इट इज अकॉर्डिंग टू यू जावा लो चाहे सी प्लस प्लस लो चाहे सी लो पाइथन कुछ भी लो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम ही रहता है तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो मान लो जैसे मेरे केस में क्या था कि स्कूल में थोड़ी सी सी प्लस प्लस पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ रखी थी तो आई स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस अगर आपने थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस पढ़ी आप उससे स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत जावा करा है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो लैंग्वेज डजंट मैटर यहाँ पे जो मैटर करेगा वो आपके होंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सो विच एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल अगर आपको आगे जाके एमएल करनी है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो सो जो भी आपको लग रहा है आपके लिए फीजिबल है वो चीज पिक कर लो ठीक है ओके नेक्स्ट ओके सो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 डेज में तो यही करेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहले तो उसके बेसिक्स रिवाइज करने हैं बेसिक्स में हमारे पास क्या क्या आता है डेटा टाइप्स हो गई उसकी रेंजेस हो गई छोटी सी चीज है देन हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं ऑपरेटर्स में हमारे पास जो सिंपल आपको वो तो पता ही होंगे प्लस माइनस वगैरह एंड इसमें आपका जो प्लस इक्वल टू छोटी छोटी चीजें ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स एल्स इफ एंड उसी के करस्पॉन्डिंग स्विच स्टेटमेंट्स कैसे यूज होती हैं वो सारी चीजें एंड देन लूप्स
लूप्स आपका काफी इंटीग्रल पार्ट है, आगे जाके आपके ऑलमोस्ट आप हर जगह लूप्स ही लूप्स यूज कर रहे होगे। एंड लूप्स के बाद आपने एक बार लूप्स कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे स्टार्टिंग में जो आप चीज करना स्टार्ट करते हो ना, वो है आपका पैटर्न प्रॉब्लम्स। सो पैटर्न प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दे रखे होते हैं, जैसे स्टार के फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, एंड हमें उन पैटर्न्स को कंप्लीट करना होता है। सो पैटर्न प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं होती कि शौक के लिए बना दी है, बट उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होता है। आपको थोड़ा समझ आता है कि अच्छा लूप एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, एक होता है ना वाइब आना किसी चीज का, तो वो वाली चीज आपको विद द हेल्प ऑफ पैटर्न प्रॉब्लम्स आती है। ऑलराइट, I'll speak in English as well. So first you have to start with data types and their ranges, then few operators and conditional statements that include your if, else if, and switch statement as well. Then comes your loops, and after you've done loops, the starting thing, initial thing which you need to revise or have a good practice at is pattern problems, because they help in developing your problem solving skills a lot. They help in understanding how actually does a language or your loops work. So this was about pattern problems. उसके बाद जो छोटे छोटे common सी problems हैं, for example like Fibonacci series and whether a number is prime or not. So such problems you can just practice those. उसके बाद ये तो हो गया आपका basics of a language. Now we come on to basic maths. So basic maths के लिए आप PNC, that is your permutations and combinations पढ़ सकते हो, because आपका आगे जाके like NCR and ये सब चीजें आपकी काफी यूज होती हैं. And next another is set theory, and you can practice puzzles. Yeah, you can practice puzzles. So जैसे कि यहाँ पे I have written an hourglass puzzle. What is that? एक बार वो भी देख लेते हैं. If you want, you people can try it, and you can suggest your solutions in the chat as well. So basically hourglass puzzle mein what is there, we are given two hourglasses. One is of 7 minutes and another one is of 11 minutes. Alright, so we are given two hour glasses. One measures 7 minutes. एक hour glass में जो है वो 7 मिनट का hour glass होता है, दूसरा 11 मिनट का होता है. पता नहीं कैसे काम करते हैं कि ऐसे सैंड आपके नीचे जाती है तो ये टोटल 7 मिनट लेता है पूरी सैंड को ऊपर से नीचे ले आने में, and this one takes 11 minutes. Now our task is to find or calculate basically with the help of these two hour glasses. हमें 15 minutes अपने देखने हैं कि कब होंगे. So this is a very popular puzzle, and आपका beginning में it is like asked to do because problem solving obviously आप इसमें दिमाग लगाते हो अपना. So this is a puzzle that you can give it a try, and if you have any solutions you can write them in the chat या फिर comments में. So yeah, puzzles like hourglass puzzle हो गया, and I guess apples and oranges करके भी एक puzzle है. So there are lots of puzzles, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो ताकि you get into the habit of problem solving. एक वो ना हो कि एकदम से आप DSA पढ़ना स्टार्ट करो and it feels overwhelming कि हाँ ये क्या आ गया. So that is why this is something basic में आएगा. अच्छा, after doing this, what you have to do is basics of time and space complexity like big O notation. आपको बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना है. आपको स्टार्टिंग में बस पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मतलब ये इतना बड़ा सा टर्म क्या बोल दिया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग O नोटेशन क्या लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, व्हाट इज दिस, कि ये ऐसे करके क्या लिखा हुआ है. सो ये सारी चीजें जो है बेसिक्स का ही पार्ट होती है. सो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइक पैटर्न प्रॉब्लम्स और लाइक फिबोनाची, प्राइम नंबर्स और आपका लूप्स वगैरह, wherever you're using all these things, like make sure या एक बार ट्राई कर लेना to figure out what is the time complexity, what is the space complexity for that particular program. Is it live or recorded? This is live, guys. This is live, completely live. And 30 days are not enough for DSA. Sudhir Rai is saying, okay, yeah, I answered to this question earlier as well. कि if you have time, definitely 4 से 5 महीना उस पे लगाओ. But अगर आपके पास time constraint है, तो for that I'm trying to give you a roadmap कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, because it is better to do something than nothing. And this roadmap can also help you in case you want to revise DSA in a month. All right. So I hope I've answered to this query. Ma'am, I'm second year student and I don't know about DSA. Can I start now for placement? Mayur, yeah, sure, definitely. You still have a lot of time. मतलब second year में हो जाएगा. Don't worry about that. So I hope I'm clear with the day 1 and 2 वाला thing. Basic maths and basics of any programming language. This you have to do. And yeah, ये hourglass puzzle भी एक बार try कर लेना. ठीक है? Next we have arrays. So arrays तो like अगर आपने DSA नहीं भी स्टार्ट करा है ना, तो arrays is a टॉपिक जो कि आप यूजुअली कर चुके हो गए, आपने कभी देखा होगा कि मतलब एक तो होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसमें चीजें आप पढ़ते हो. उसके अलावा एरेज आप नॉर्मली भी प्रैक्टिस कर ही लेते हो.
सो एरेज इज लाइक फंडामेंटल थिंग, काफी ज्यादा यूज होती है. सो हमें एरेज पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है? बेसिक क्वेश्चन से. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कितने दिन डिवोट करने हैं? 3 days. वाई एम आई सेइंग 3 days? बिकॉज एरीज में ना बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे आपका अप्रोचेस होते हैं जो आपको पता चलेंगी. एंड अगर आप, हाँ, if you're switching, like if you've studied basics, loops, or you've studied about how pattern problems are working, so it might be possible कि you still haven't got that much hang of programming language or that much hang of how actually the code is working. So instead of just putting a lot of burden on you कि 2 दिन में arrays खत्म कर दो, we are giving it 3 days so that you can actually understand the concepts of arrays. Because if you're able to understand how code is working with the help of arrays, then it will be much easier for you to study the rest of the data structure. So that is why we're giving it 3 days, 3, 4 and 5, in which you're going to study arrays. And आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? अपने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे. लाइक सम ऑफ एरे एलिमेंट्स हो गए जिसमें आपको एरे दे रखा होगा पूरा, आप उनका सम निकाल रहे होगे. ऑलराइट गाइस, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस. एक बार ये देख लेते हैं, लास्ट में फॉर श्योर Q&A करेंगे, बट आप ऐसे बीच में क्वेश्चन करोगे ना, आई वोंट बी एबल टू सी, एंड फिर वो रह जाएगा, आपका क्वेश्चन रह जाएगा. ठीक है, सो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द रोड मैप. ऑलराइट, सो बेसिक क्वेश्चंस में वी आर गोइंग स्टार्ट विद सम ऑफ एरे एलिमेंट्स. एंड हमारे पास मिनिमम एलिमेंट हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट हो गया, सब एरे बेस्ड क्वेश्चंस की सब एरे निकालना है जिसमें हम फॉर लूप लगाते हैं, हमारा लाइक उसमें नेस्टेड फॉर लूप्स लग रहे होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस कर लेना, सो यू गेट अ हैंग ऑफ हाउ एक्चुअली एरेज वर्क होते हैं. ठीक है, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ना, पॉइंटर अरिथमेटिक. ठीक है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है? देखो, पॉइंटर्स के बारे में स्टडी करना ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको इससे एरेज भी अच्छे से समझ आएंगे. आपको इसमें एरेज में इंडेक्सिंग होती है, या फिर एड्रेसिंग कैसे होती है, या फिर मतलब हम, अगर आप एरेज की क्वेश्चन देखो कि मतलब ऐसे मान लो ए आपका एरे है एंड आप A+3 कर रहे हो, इससे क्या आएगा? स्टार ऑफ A+3 कर रहे हो, इससे क्या आएगा? मतलब ये सारी चीजें जो हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंटर समझ आना चाहिए. नॉट ओनली एरेज, आपका लिंक लिस्ट में तो खासकर पॉइंटर्स काफी यूज होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग नोट्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दैट इज वाई पॉइंटर अरिथमेटिक थोड़ा सा पढ़ लेना बेटर रहेगा फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज आप जब डायनेमिक एलोकेशन कर रहे होगे तो वहां पे भी आपके पॉइंटर्स काफी काम आएंगे. सो इसलिए पॉइंटर अरिथमेटिक भी पढ़ लेना. उसके बाद क्वेश्चंस की हम अगर बात करें तो लाइक एरे रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन की, आपको एरे को रोटेट करना है बाय सम अमाउंट, ऐसे पीछे से उठा के आगे लगा देना. एंड देन यू हैव अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, ट्रैपिंग रेन वाटर. ठीक है, एंड ट्रैपिंग रेन वाटर मतलब काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसके काफी वेज होते हैं. आई गेस इसमें 2 भी लग जाते हैं, सो यू कैन जस्ट रेफर दैट. बहुत सारे आपको अलग अलग रिसोर्सेस मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वी हैव पेयर सम प्रॉब्लम. सो लाइक काफी फेमस सा प्रॉब्लम मान लो, क्योंकि एक तो इसमें आप पेयर सम प्रॉब्लम इटसेल्फ इज अ गुड प्रॉब्लम, एंड इसके अलावा इसमें हम एक नया अप्रोच सीखते हैं, एक नया एल्गोरिथम सीखते हैं, जिसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं फर्दर दूसरी प्रॉब्लम्स में. सो पेयर सम प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है? हमें एरे दे रखा होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एंड हमें कुछ नंबर टारगेट सम दे रखा होता है, एंड वी हैव टू फाइंड द पेयर व्हिच हैज अ सम इक्वल टू दैट गिवन टारगेट. सो अगर हम इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से करते हैं, सो बिग ऑफ n स्क्वायर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है. सो पेयर सम प्रॉब्लम का हम एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखेंगे ऑब्वियसली. ब्रूट फोर्स अप्रोच देखने के बाद यहाँ पर आप एक अप्रोच पढ़ोगे विच इज योर 2 पॉइंटर अप्रोच. ठीक है, जो पेयर सम प्रॉब्लम की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगी. एंड दिस 2 पॉइंटर अप्रोच विल बी रेलेवेंट इन अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. इट विल बी यूज्ड a lot of at lot of problems again. So yeah, 2 pointer approach और अच्छे से समझने के लिए पहले pair sum problem कर लेना. Then we have a question, merge two sorted arrays. In merge two sorted arrays, what are वो हमारे पास 2 sorted arrays होंगे, हमें उसे merge करना है, तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे? अगेन एक पॉइंटर हमारा मतलब एक वेरिएबल फर्स्ट एरे पे से स्टार्ट होगा, एक सेकंड एरे पे से स्टार्ट होगा, और हम एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे होंगे, कौन सा वाला छोटा है उसको पहले लगा दो, उसके बाद जो और उसके बाद उसका पॉइंटर आगे कर दो. सो दिस वे दिस विल बी वर्किंग. तो merge two sorted arrays से आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हाँ लूप्स कैसे काम कर रहे हैं या एरेज में कैसे काम होता है, एवरीथिंग. Then we have a sliding window approach. This is not a question. This is basically an approach कि हमारे पास sliding window काफी popular है, and ये आपका सिर्फ arrays में नहीं, आपका strings में भी काफी काम आएगा. So sliding window approach जो हो गई, और उसके बारे में पढ़ लेना, और उसके related कुछ questions आपको दिखें तो बहुत ज्यादा मत करना, बस एक बार approach पढ़ के 2 questions I guess are more than enough. 2
क्वेश्चंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 डेज है करने के लिए एंड वी हैव गिवन 3 डेज टू आरएस, सो हम पूरा एक दिन एक टॉपिक पे नहीं लगाएंगे. Then we have sub array with given sum. Then we have maximum sub array sum. So ये भी प्रॉब्लम है आपका कि हमारे पास हमें सब array से निकालना है जिसका सब मैक्सिमम हो. सो इसी का एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है एंड ऐसे इनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास एक केडेंस एल्गोरिथम है. इसकी भी स्टडी कर लेना कि केडेंस एल्गोरिथम में हम कैसे मैक्सिमम सब array सम निकालते हैं कि कितना आ सकता है. ठीक है. इसमें आई गेस इस केडेंस एल्गोरिथम वाली ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम क्यूमुलेटिव सम एरे करके भी कुछ यूज करते हैं. सो वो वाली चीज भी आप स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट अनदर थिंग इज हमारे पास एक क्वेश्चन होता है सॉर्ट जीरोस वंस एंड टूज. ठीक है. हमारे पास एक एरे होता है उसमें हमारे पास कुछ जीरोस होते हैं, कुछ वंस होते हैं, कुछ टूज होते हैं. हमें उन्हें सॉर्ट करना होता है सच दैट जीरो पहले आ जाए सारे, वन बाद में, टू बाद में. तो इसमें हमारी एक डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम करके कुछ होती है. सो उसको भी पढ़ लेना. आई गेस कोडिंग निंजास के भी ब्लॉग्स में दे रखी है. सो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना. काफी सही एल्गोरिथम है और इजी सी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इसमें लो मीडियम हाई करके कुछ यूज होता है आपका. एंड देन यू हैव लास्टली दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा मीडियम हार्ड डिफिकल्टी लेवल का है. मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज. काफी अच्छा क्वेश्चन है. अगर ये कर लेते हो ना काफी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा एंड यूल फील काफी कॉन्फिडेंट क्योंकि मतलब इजी क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स और कुछ टॉपिक्स या अप्रोचेस मैंने बताई हैं जिनको आप कर सकते हो एंड आपका एरेज काफी स्ट्रांग हो जाएगा. एंड नॉट ओनली एरेज, you'll become better at problem solving as well. Okay, so this was about arrays. Yeah, guys, please एक बार roadmap देख लो and definitely answer the questions. Okay. Yeah, sure. I can share the document as well. You can even take the screenshot. All right. Next we have डे 6. तो हमने 3 से 5 डेज जो है अपने एरेस को दे दिए. ठीक है, परफेक्ट. हमने 3 दिन अपने एरे पे लगा दिया. अब हमारे पास आता है 2D एरेज या फिर मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हो. सो इसको मतलब देख के लोगों को लगता होगा कि इतना कहाँ ही आएगा, बट लेट मी टेल यू इंटरव्यूज में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है. माय पर्सनल एक्सपीरियंस आया हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई विल सजेस्ट कि इसको भी एक दिन दे देना. 2D एरेज या मैट्रिक्स जो भी है इसकी कुछ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको करने का टाइम मिल जाता है तो वो भी कर लेना. एटलीस्ट बेसिक्स जो चीजें हैं वो तो कर ही लेना. उसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रेवर्सल वेव ऑर्डर की लाइक 2D मैट्रिक्स होता है, आपको ऐसे ऐसे वेव ऑर्डर में प्रिंट करना है. एक होता है आपका स्पाइरल ऑर्डर, ऐसे स्पाइरल ऑर्डर होता है. ये हमारा 2D एरे में ही होता है. सो ये दोनों चीजें भी ट्रेवर्सल की आती है 2D एरे के अंदर. नेक्स्ट वी हैव रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. इन रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. इसमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है ना कुछ ऐसी आती है कि मैट्रिक्स को 90 डिग्री से रोटेट कर दो. सो प्रॉब्लम्स लाइक दीज इन्वॉल्व आपका यूज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है एंड देन कैलकुलेशन करके वी आर एबल टू फाइंड और आफ्टर की रोटेट करने के बाद क्या आएगा. सो दैट इज वाई रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है कर लेना. ट्रांसपोज और ये जो रोटेट है मैट्रिक्स में 90 डिग्री, जस्ट डेफिनेटली डू देम. नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दो मैट्रिसेस दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है. हाउ टू डू दैट. सो ये कुछ क्वेश्चंस है अगर आप 2D आरएस के कर लेते हो. सो आई गेस इतना भी के लिए इनफ रहेगा. ऑलराइट, सो दिस वाज फॉर डे 6. Next, we have day 7 to 8, and that is your strings. So strings, let me tell you one thing. Strings is a very good concept, is an important concept as well. It's like arrays की तरह ही important है. And strings के questions में ना at times बच्चे confuse बहुत हो जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. सो इसलिए स्ट्रिंग्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ऑब्वियसली आप इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे जो कि आपके ट्रेवर्सल बेस्ड होते हैं. और स्ट्रिंग्स में एक और चीज बता दूं, इसमें आपका जो कुछ लाइक स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आपकी लेंथ हो गया या फिर या स्टैंडर्ड सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर फंक्शन जो होता है, ये सारे जो आपको फंक्शंस है ना थोड़े से इनके बारे में पढ़ लेना. एंड स्ट्रिंग कंपेयर हो गया और यू हैव स्ट्रिंग कॉपी हो गया. सो फंक्शंस लाइक दीज इनके वो भी पढ़ लेना कि जिनके जो स्टैंडर्ड होते हैं. ठीक है. दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. एनीवेज, सो बेसिक क्वेश्चंस इनके पढ़ लेना. ट्रेवर्सल बेस्ड एंड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है या नहीं, ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ये कर लेना. तो स्ट्रिंग थोड़ा समझ आ जाएगा होता क्या है एग्जैक्टली. देन वी हैव क्वेश्चंस लाइक वर्ड काउंट एंड स्ट्रिंग्स की स्ट्रिंग्स का वर्ड काउंट क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक ऐसे पूरी
मतलब लंबी सी स्ट्रिंग ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में भी रखी होगी, उसमें से हमें निकालना है कि कितने वर्ड्स हैं, काउंट करना है। ठीक है ना? जैसे ऐसे ही ले लो, ये पूरा मान लो ये हमारा गिवन वो है, स्ट्रिंग है पूरा, इसमें से हमें वर्ड्स निकालने हैं कितने। ठीक है? एज़ यू कैन सी इसमें लेटर्स भी हैं, स्पेसेस भी हैं, सो इस तरीके से हमें वो वर्क करेगा। देन अनदर इज योर रिवर्स स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग दे रखा है उसको रिवर्स करना है, सो दिस क्वेश्चन। एंड अनदर इज योर स्लाइडिंग विंडो फॉर स्ट्रिंग। तो मैंने पहले भी बताया था, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो है काफी ज्यादा यूज होती है, नॉट ओनली इन आरईज, आपको स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस में भी मिलेगी। सो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक डेफिनेटली पढ़ लेना। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक डेफिनेटली पढ़ लेना। सो ये आपका 7 to 8 2 दिन इसलिए दे रही हूँ, कॉस्ट स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। सो हमारे पास अभी तक क्या हो गया, हमने 8 डेज में इतना काम कर लिया है। बेसिक्स पढ़ लिया, लैंग्वेज का भी, मैथ्स का भी, एरेज देख लिए, 2D एरेज देख लिया और स्ट्रिंग्स पढ़ लिया। सो लाइक एक लगभग आपका एक हफ्ते में आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डे 9 से डे 10 तक। सो ये 2 दिन हमें क्या करना है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर्चिंग इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है लीनियर सर्च। बेसिकली सर्चिंग में हम एलिमेंट एक सर्च कर रहे होते हैं, कि हमारे पास ऐसे गिवन एरे है मान लो, उसमें हमें कोई एलिमेंट ढूंढना है, तो सबसे पहली अप्रोच हमारी जो होती है ब्रूट फोर्स लीनियर सर्च होती है, बिग ऑफ एन में काम करती है। ठीक है, अब इसका एक फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हम एरे को डिवाइड करते रहते देन वी सर्च द एरे, कि जिस स्पेस में हमारा एलिमेंट हो सकता है वहां पे हम एलिमिनेट कर देते हैं पोर्शन को। सो दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क। सो मेक श्योर कि बाइनरी सर्च अच्छे से कर लो। इसके अंदर हमारे अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको भी ढंग से कर लेना। आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड को खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहो करके देख लो, नहीं तो जो एसटीएल है आपका इसके अंदर होता है ऑलरेडी अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए, आप उसे भी यूज कर सकते हो। एंड ये आपका काफी मतलब अगर आपको इसके कंसेप्ट नॉलेज है ना, कि अपर बाउंड व्हाट इज लोअर बाउंड एंड व्हाट इज अपर बाउंड, सो इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस, कि हमें एक एरे दे रखा है, कुछ एक एलिमेंट दे रखा है, उसकी फर्स्ट अकरेंस और उसकी लास्ट अकरेंस निकालनी है। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च, ये भी बाइनरी सर्च पे बेस्ड है, सो इसको भी कर लेना। नेक्स्ट वी हैव अग्रेसिव काउस प्रॉब्लम। सो यहाँ से हमारे पास ये जो तीन आपको दिख रही है, ये आपकी बाइनरी सर्च की काफी फेमस लाइक आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे आप अप्रोच लगाते हो सेम, लाइक अग्रेसिव काउस प्रॉब्लम्स हो गई, एंड देन यू हैव बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम, लाइक काफी कन्वेंशन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक बच्चा करता है, या कर लेना तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे उसको यूज करना है। देन वी हैव सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में अभी हम यही पढ़ रहे हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, काउंटिंग सॉर्ट। सो ये तीनों सॉर्टिंग, चारों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, बेसिक्स ही हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनकी वर्किंग कैसे है, बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ये काम कैसे करती हैं, और इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, अगर बराबर है तो क्या फर्क है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ आपके, क्योंकि सॉर्टिंग लाइक एट टाइम्स जैसे सीधा डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने को नहीं आती, बट पूछ लेते हैं। एंड आप इसमें खासकर इनमें ये पढ़ जाना कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ जाना तो बेटर रहेगा, इंटरव्यूज में पूछ पूछ सकते हैं आपसे। सो दैट इज वाई सॉर्टिंग के अंदर आपका बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट, ये काउंटिंग सॉर्ट, ये तीनों चारों अच्छे से कर। सो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को आपको 2 दिन लगाना है एंड सारी चीजें अच्छे से करनी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। ओके, सो ये जो टॉपिक है ना, खासकर ये वाला रिकर्शन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, दे आर लाइक कि रिकर्शन की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे गायब हो जा रहा है, वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बेसिकली द कोड इज वर्किंग, और व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड, नहीं समझ आता है। सो रिकर्जन के लिए आई जस्ट गिव यू वन सजेशन दैट रिकर्शन के प्रॉब्लम के अंदर never try to imagine how the whole code is working while you are writing the solution. I repeat, जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो उस टाइम पे आपको नहीं सोचना है कि रिकर्सिव कॉल जो है क्या कर रहा है, क्या करके देगा, या कैसे काम कर रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज बिलीव इन दैट रिकर्सिव कॉल, कि वो मैंने उसको जो इनपुट दिया है उसके लिए वो आउटपुट डेफिनेटली लाके देगा। So whatever input I have given to that recursive call, like recursion
को जो भी मैंने इनपुट दिया है दैट विल फेच मी द आंसर। सो रिकर्शन के अंदर यही करना होता है बस कि हमें रिकर्सिव कॉल से एक छोटी प्रॉब्लम के लिए आंसर लेकर आते हैं एंड उस पर कुछ स्मॉल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एंड देन हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो रिकर्जन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। हाँ, लेकिन अब रिकर्शन कैसे एक्चुअली में इंटरनली काम कर रहा है वो चीज आपको सोचनी है। वो कब सोचनी है? जब आपने अपना सॉल्यूशन लिख दिया। अगर आंसर करेक्ट आ रहा है तब भी, अगर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तब तो डेफिनेटली। दोनों ही केसेस में आपको देखना है कि कैसे वो पूरा कोड काम कर रहा है एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ड्राई रन। ठीक है, सो आपको ड्राई रन करके देखना है। आपको अपना कोड ड्राई रन करके देखना है। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन का सिंपल सा मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, क्या। सो ड्राई रन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी कोड होता है ना उसको हम पेन एंड पेपर पे उठाते हैं और अपना मान लो एक सैम्पल टेस्ट केस उठा लो। उस सैम्पल टेस्ट केस में आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हो जो आपके सामने कोड में लिखे हुए होते हैं। So when you dry run your solution, you are able to better understand how your whole code is working, how your whole program is working, and especially in case of recursion की problems, when you start dry running your codes, so after some point of time आपको खुद realize हो जाएगा कि okay, this is how my code is supposed to work, or this is how my code is working. So you don't need to stress about how it is actually working while you're writing the solutions. ठीक है, सो ये हमारा रिकर्जन का पार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपना फैक्टोरियल हो गया हमारा, जो भी फैक्टोरियल निकालते हैं किसी नंबर का, फिबोनाची सीरीज में nth फिबोनाची नंबर, उसमें हम n-1 और n-2 के लिए रिकर्सिव कॉल्स लगाते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल में हम n-1 के लिए लेकर आते हैं। देन बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन, हम बाइनरी सर्च को रिकर्जन की हेल्प से भी कर सकते हैं। वो सिंपल सा कोड होता है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको करके देख लेना। उसके अलावा हमारे पास एक आती है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, जिसमें कि हम मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो एट टाइम्स क्या होता है, इन सेवरल इंटरव्यूज, कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज में ना वो आपसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी खुद लिखवा लेते हैं। लाइक कुछ कंपनीज जो हैं वो एसटीएल अलाउ नहीं करती है। सो उसमें आप सॉर्टिंग मतलब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब जो भी आप कंफर्टेबल सॉरी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो मर्ज सॉर्ट आई बिलीव कि काफी अच्छी एल्गोरिथम होती है, इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम होती है। तो आप करना चाहो तो मर्ज सॉर्ट से भी कर सकते हो। सो या डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होती हैं ये दोनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सो यू कैन डू दैट। अनदर प्रॉब्लम इज योर टावर ऑफ इनोई। इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, काफी ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है एंड लोग मतलब पहले तो उसको सुन सुन के काफी हो जाते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है, बट बहुत ही सिंपल सी है। 3-4 लाइनों का कोड होता है इसका, लेकिन इससे आपको रिकर्शन एक्चुअल में समझ आता है कि अच्छा इसका रिकर्शन का काम क्या है। टावर ऑफ इनो इज नॉट अबाउट कोडिंग द सॉल्यूशन, इट्स अबाउट हाउ और द कोड इज वर्किंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड दैट। सो रिकर्जन में हमें बेसिक इतना तो कर ही लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग बेस्ड रिकर्जन की प्रॉब्लम्स। अब स्ट्रिंग बेस्ड रिकर्जन की प्रॉब्लम्स में आपका कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइक सबसीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग, की सबसीक्वेंसेस आपको निकालने हैं। लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फोन नंबर, की आपको ऐसे फोन नंबर दे रखा होता है एंड आपको उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस निकाल रहे होते हैं, क्योंकि फोन नंबर में हमारा क्या होता है कि हर एक जो नंबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। लाइक हमारे पास एबीसी होता है 1 के करस्पॉन्डिंग, देन वी हैव 2 के करस्पॉन्डिंग, मतलब ऐसे ऐसे जो भी 2 के करस्पॉन्डिंग एबीसीडी। सो इन दिस वे हमारे पास चीजें काम करती है। तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं कि उन सारे लेटर्स के लिए या उन सारे नंबर्स के लिए हमारे पास क्या क्या लेटर्स के कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, सो ये भी आपका काफी अच्छा रिकर्जन का, इसको आप एडवांस्ड रिकर्जन भी बोल सकते हो। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रिंग वाली, आपको थोड़ा रिकर्जन में जब कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग अगेन लाइक देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है जो आप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी सबसेट्स ऑफ एन एरे, वेरी बेसिक थिंग कि आप एरे के सबसेट्स निकाल रहे हो। देन वी हैव एन क्वींस प्रॉब्लम, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड एंड बेसिक प्रॉब्लम और फेमस प्रॉब्लम आई से। देन वी हैव रैट इन अ मेज एंड सुडोकू सॉल्वर। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है दे आर पार्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग।
एंड ये काफी फेमस प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप इन्हें कर लेते हो सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बैक ट्रैकिंग अच्छे से, एंड आप आगे के और क्वेश्चंस भी कर पाओगे. So yeah, and one thing if you noticed, I have given 11, 12 and 13. That is 3 days for recursion and backtracking. Why? Because backtracking से ज़्यादा I'm emphasizing on recursion. It's a very important topic. Not only because recursion एक topic है या बहुत ऐसे directly कुछ पूछ लिया जाएगा, but अगर आपको आगे dynamic programming समझनी है, आपको ट्रीज में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रिकर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एज यहीं पे देख लो, स्ट्रिंग में भी आपका रिकर्जन यूज होता है, आरएस के केस में भी रिकर्जन यूज करके प्रॉब्लम्स होती हैं. देन वी हैव डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन नहीं लिखते हो, या टैबुलेशन, या जो भी आगे मैं बताऊंगी, डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका नहीं लिखते हो, आप रिकर्शन से स्टार्ट करते हो. सो इसलिए रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होगा. सो दैट इज वाई 3 दिन अच्छे से लगा के रिकर्जन अच्छे से करना है, एंड देन बैक ट्रैकिंग के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करने. ठीक है. Will recording, yeah, this recording will be there after the live ends. It will be there on the YouTube channel itself. All right, so yeah, this was for recursion and backtracking. We've invested 3 days on that. Now we move on to linked list. So अब हमारे पास 14 and 15 डे है जिसमें हम लिंक लिस्ट पे काम करना चाह रहे हैं. फाइन. अब 14-15 डे पे लिंक लिस्ट पे हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हमें बेसिक ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है, मतलब बेसिकली लिंक लिस्ट को देखना है. लिंक लिस्ट होता क्या है हमारे पास? ऐसे एक नोड होता है, ठीक है, इसके अंदर एक तो हमारा होता है डेटा, मैं बड़ा बना देती हूँ, ऐसे नोड होता है, ठीक है, और इसमें एक होता है डेटा और एक होता है हमारा नेक्स्ट का एड्रेस, जो भी है मैं नेक्स्ट ही लिख देती हूँ. तो इसके अंदर क्या होल्ड होता है? एड्रेस होता है, नेक्स्ट जो भी नोड होता है. सो दिस इज व्हाट लिंक्ड लिस्ट इज. तो पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि कैसे करते हैं. ये नोड के लिए क्लास बनानी होती है, वो क्लास कैसे बनाई जाती है? वो क्लास बनाने के बाद सॉरी, जो बेसिक ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट में, कि जैसे हमारे पास एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसमें से हमें ith नोड फाइंड करना है, या फिर एक लिंक लिस्ट के अंदर किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है एक नोड को, या डिलीट करना है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लिंक लिस्ट के बेसिक ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम्स में ही आती हैं. सो ये हमें सबसे पहले ये करनी है ताकि हमें समझ आ जाए कि लिंक लिस्ट वर्क कैसे करता है, हाउ बेसिकली लिंक लिस्ट इज वर्किंग. ठीक है ना. सो ये सब चीजें हमें पढ़नी है. Alright, so we have to study basic traversal based problems, and then we move on to reversal linked list. So reversal linked list is again like kind of a traversal based, but it's a different kind of a thing. But reversing a linked list is again a very basic and a standard problem. And then we have, just a minute. Okay, so after doing reversing a linked list problem, then we have slow and fast pointers. All right, so slow and fast pointers, what is this? This is kind of an approach. This is again like sliding window approach थी जैसे पहले, and two pointer approach थी. ऐसे ही स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वाली जो है एक अप्रोच है जिसमें हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स यूज करते हैं. Here we use 2 pointers named slow and fast, and with the help of that we solve questions. So I have a link here. Okay. Yeah. So as you can see, this is Floyd's cycle detection algorithm. So मैं इसका ब्लॉग का लिंक भी डाल दूंगी. If you want, I can add it in the chat itself. सो ये कोडिंग जस्ट का ही ब्लॉक है. सो इसमें आप पढ़ लेना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाली चीज में कह रही हूँ, कि काम कैसे करता है, ये क्या होता है, ये कैसे एक्चुअली ट्रू है. सो ये चीज आप समझ लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगी. एंड वो क्वेश्चंस काफी मतलब उसके अराउंड काफी क्वेश्चंस आते हैं. इट इज एक्चुअली वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आई विल ऐड द लिंक हियर. ठीक है. All right, so moving on. So using slow and fast pointers, we have some questions like midpoint in linked list. You can do it normally as well, but when you'll be able to understand the concept of slow and fast pointers with this question as well, because you'll be using
the concept here. Then we have detect loop in linked list, again an application of slow and fast pointer. And this मतलब you the link that I have provided there उसमें आपको ये समझ आ जाएगा what is basically slow and fast pointer and how things are going to work inside it. And इसमें हम detect loop in linked list वाली चीज भी हम उससे समझ लेंगे. Next we have merge sort, quick sort on LL. And like this is again merge sort and quick sort we've already studied, but this is basically focusing specifically on linked list, how it's going to work. Then we have merge two sorted linked lists. And then we have add two numbers problem. So add two numbers problems is basically relevant in arrays as well. What happens in this problem, that we are given two numbers, like for example, there's one number 2. Just a minute. We have a number, let's say 2, 3, and 4, and 5. So this is one number. So this is a linked list, and this is your first number. Similarly, we are given another number in the form of linked list, and we have to add both of those numbers and return the answer in the form of linked list again. So this is a very good question, and this will be found, you can find this question in terms of arrays as well. And I guess this question is present in lead code as well. So it's a very good question. So yeah, you can definitely practice it and you'll be able to understand the concept of linked list with this one better. So this was about linked list. So in day 14 and 15, in 2 days, we are going to study linked list this way. All right. So next we have day 16 and 17. That is your stacks. Just give me a minute. Okay. So for stacks, we are devoting our day 16 and 17. So first of all, before moving on to actually solving the problems, the very important or basic thing is implementation of stacks. I'm audible, right? So can somebody confirm? Yeah, sure. I'll share the PDF link. All right, cool. Thank you, Harish. So for stacks, first of all, we'll have implementation, and that will be done using arrays as well as linked lists. So make sure that you are thorough with these two things. Because when you study implementation, when you understand the implementation of a particular data structure, when you have done that properly, you're able to understand better how are we going to use that particular data structure, or how is it going to be useful for us. And the more you are thorough with the basics, the more easy it becomes for you to solve the difficult problems. So instead of directly jumping onto problems related to stack, I will definitely suggest that practice implementation using both arrays and linked lists so that you're able to understand the data structure better. So this is about implementation. Okay, cool. Thank you, guys. Yeah, I'll definitely share this PDF. So yeah, implementation based, like using arrays and linked lists. Then we have prefix to infix conversion, prefix to postfix, and postfix to prefix. These three questions, very important, or you can say very much asked common questions, standard questions regarding stacks. Then we have balanced parentheses question. It's also an important one. You can say it helps you to understand how to use stacks better. Like you are given a string and you have to check whether the parentheses are balanced or not. So again, this is a very standard problem. Then you have a stock span problem where you're given prices of different stocks for n days, and for each and every day you have to calculate how many days before that particular day the prices were lower than it, strictly lower than it. So this is how the stock span problem works. If you use the brute force approach, it will take more time, complexity. And so basically stock span problem helps again you to understand how stacks work. So yeah, you can practice more questions on stacks, but these are some of the few things that you are actually supposed to do. Like these are a must do things for you if you want to understand stacks better. Then now we have day 18, which is devoted to Q. All right. So we have day 18 devoted to Q. So as you can see, up till now, till 17 day, we have come till stacks, and it's a very good progress.
Even if you've done till now, this is also very good progress. But now we'll move on to different, more important topics. So first of all, Q is again like stacks. First, do the implementation using arrays and linked lists, and then practice application-based questions. Don't worry, guys. I'll even show you on Code Studio from where you can practice different questions or what all questions or notes you can refer to. Next, we have day 19 and day 20, and that is devoted to trees. We are giving 2 days, 2 trees. First of all, we have to start with basics, and that includes your tree node class. That is, if this is the structure of a tree, right? This is how tree is. If I talk about a general tree, I'm not talking about binary tree. All right, so this is a basic structure of tree in which a tree node has to be created. Since it's a hierarchical structure, you cannot simply use arrays or linked lists kind of a thing. So you have to make a tree node class. So first of all, you have to understand the concept of that. Then in basics, you have to input how you're going to take input from the user, then how you're going to print elements, height of a tree, depth of a tree. So all these basic questions and basics of a trees that will help you understand the data structure better. Make sure you practice that. Then, in case of trees, after doing all these questions for trees, then study about binary trees as well. What is binary trees? In case of your normal trees, a particular node can have many children, but in case of your binary tree, a node can only have 2 children. It can only be like this. It can only have 2 children. Maximum of 2 children are allowed. All right. So after studying binary tree basics, again, you can do all this in your binary tree as well. And then comes the important part, and that is your traversals. That is your pre-order, in-order, and post-order. So these all traversals, initially you'll be doing them with recursion. So yeah. So in case of traversals, also there can be questions asked. You can refer about questions asked based on pre-order, in-order, post-order, in which you're not asked, which are you asked to not use recursion. कि आपको इन traversals को करना है, but recursion बिना use करे करना है. तो वो वाले questions भी आप देख सकते हो. You can check them out. Resources like is GFG पे भी they are available. But even if अगर आप start कर रहे हो, अभी आप basics अच्छे से करना चाह रहे हो, so I'll just suggest कि for now just go through traversals one with the help of recursion कि how does pre-order, in-order, and post-order work. Then we have your construction based questions that include construct tree from pre-order and in order, and construct tree from post-order and in order. What are these questions? Basically, you will be given pre-order traversal of a tree. You don't know the tree. You'll be given pre-order and in-order traversals in this, if I talk about this question. And from those traversals, you have to make the tree. So this is a very important and a very interesting question, again with the help of recursion. So like before moving forward, I would like to say this, as I told you before, recursion is a very important topic. It will be used everywhere. So that is why make sure you're thorough with it. So coming back to this question, so you have to construct tree from pre-order and order. Again, you'll be using recursion. So that is why make sure recursion is pretty good. And yeah, these are very good questions. So practice them properly. And then comes diameter of binary tree. So ये question जो है, इसमें particularly you'll be learning how you are using a class, how you'll be using a class to return multiple things at the same time, because to calculate something you need multiple things. So आप एक बारी में बहुत सारी चीजें आप भेज रहे होगे क्लास की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ताकि आप उससे अपना आउटपुट प्रोसेस कर सको. सो डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक कि हाउ यू एक्चुअली यूज क्लासेस, ताकि आप एक साथ काफी सारा डेटा लेके जा सको. सो डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एन इंटरेस्टिंग वन टू. So this is what we'll be doing. Next, we have views. Again, an important thing, top view, bottom view, all these views wale questions. Now width ka concept bhi pad rahe hoge, width of a tree. So like, yeah, all these questions, again, you can definitely check them out, and you should definitely study. It will help you understand your trees better. And then we have some standard questions like lowest common ancestor of binary tree. So make sure you practice questions like these. So for your day 19 and day 20, you're going to practice trees properly this way. So like throughout this roadmap, I'm trying to provide you the questions that you must do. And if you have extra time or anything like that, you can definitely practice more. But these are some questions that if you practice are more than enough for you to understand the concepts of data structures.
which are relevant or important enough. Next, we have day 21. So after completing binary trees or generic trees in 2 days, you're going to devote another day to binary search. Now, what is binary search tree? It is a kind of binary tree in which there are certain rules like how is it? First of all, that the left subtree, all the elements in the left subtree, they should be the value should be smaller than that of this one, and all the values in the right subtree should have values greater than this one. And similarly, your left subtree should also be a binary search tree, and this one also be a BST. So yeah, this is how your BST is, and make sure to practice basic problems like search in BST. If you want to search a value or search a variable or search a key in a BST, how do you do that? Like for example, हमें कोई value search करनी है यहाँ पे नहीं है, so we'll check if that value is greater than this value. So we are definitely going to search in the right subtree. We're not going to traverse in the left subtree because we know that is not our search space. So this is how you're going to work with BST. Then another question, check if BST that you are given a binary tree, and you'll have to check whether that given binary tree is a binary search tree or not. Again, an important and a basic or standard problem. And next we have construction based problem, that BST construct BST from sorted array, or construct BST from linked list, that you're given a sorted array and you have to construct a BST from it. And next we have insert or delete in BST. Again, an important concept, that you will be given a BST and a number, and you have to insert that number in that BST, or you have to delete some value. So again, recursion will be used, and it's a very important topic, very important concept as well. So make sure you do practice insert and delete, or insertion and deletion in BST. Then we have lowest common ancestor in BST, again, just like binary tree. Then we have second largest element in BST. This question will again make you brainstorm. So very good question. Then we have some of k smallest elements in BST. So I'm giving you some of the standard problems that you can practice, and definitely you can do more if you have time. You can definitely refer more questions. So this was about your BST for day 21. Next, we have priority queues and heaps. Okay, yeah. So day 22 and day 23, we are devoting to priority queues and heaps. Basically, using heap data structures, we implement priority queues. And first of all, we'll be doing implementing a priority queue, like uh, the whole code, just like we do implementing stack using array and linked list. Similarly, like that, you can use class to implement it using your heaps. Then we have conversion problems like converting heap into BST or into an array. And then we have heap sort, which is like an in-place sorting algorithm, in which will be asked like what you can do. Like हमें heap sort में array बनाना ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है, तो हम हीप सॉर्ट में जो हमारे पास एरे बनता है उसी के अंदर हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं. सो या अगेन इन प्लेस दिस हीप सॉर्ट is again a very good question. Then we have k-based problems. So in case of priority queues, we have काफी सारी k-based problems. Not only these, you'll find more of them, but ये तो practice कर ही लेना. Like merge k sorted arrays, merge k sorted linked list, kth largest or kth smallest element. So these are few standard problems which are part of this k-based problems, and these are not very easy level problems. थोड़ी medium hard difficulty level की problems हैं, but if you are able to do them, ये तीन भी कर लेते हो ना, तो चीजें काफी अच्छे से समझ आ जाएंगी. You'll be able to understand the concepts of priority queues better. And I guess, yeah, priority queues, if you are able to practice even 2-3k based problems, it's more than enough, because you'll get into the habit of understanding how you're supposed to write an approach for k based problems. So this is what you're going to do in priority queues and heaps: implementation, then conversion, and then in place heap sort, and definitely k based problems. Like I'll mark star over here. K based problems are a must. So definitely do them properly. Then we have hash map. Okay, I will definitely provide this PDF. Don't worry about it.
All right. So we have done priority queues up till now. Next, we have hash map on day 24. So hash map, let me tell you, hash map is a thing. Like in a lot of questions, it's not like a question will completely come based on hash map. It's rare. Mostly the questions will be like where you'll be using hash maps. Inbuilt hash maps को आप use करके उन्हें solve कर रहे हो. They'll act like a helper or helping thing to you while you're writing an approach to a particular problem. So that is why hash maps को study करना आसान रहेगा. एक ही दिन इसलिए दिया क्योंकि बहुत easy है, हो जाएगा. So first of all, you need to study inbuilt hash map. Inbuilt hash map में आप unordered map and normal जो आपका map होता है, आप इन्हें study कर सकते हो. आप इन्हें स्टडी कर सकते हो. सो कुछ क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस, like maximum frequency number, pairs with difference k, longest consecutive subsequence. So questions like these, I've written few questions. You can practice more, but I'll suggest like just study how hash maps are used or what are hash maps, and then practice some, like I guess 3 of these are enough. And then these hash maps will be used. You'll use STL in various problems as a helping hand for you. So that is why hash maps again become an important part. Then we have graphs. All right, so now till day 24, we are done with hash maps. Now we have graphs for day 25 and day 26. So first of all, you're going to study about adjacency matrix and adjacency list. Make sure you study about both of them, because at times, or in questions, this will be a tricky thing, that the question it will be looking like you can implement it using adjacency matrix. आपको लगेगा उससे हो जाएगा, and you will be able to do it, but because of the constraints you will not be able to do it properly, or there will be some time limit exceeded, runtime error, ऐसा कुछ भी error आ जाएगा. So in that case you'll have to do that question with adjacency list. So that's why I'm suggesting even if you're practicing most of your graph questions using your matrix, make sure you have a practice of using your list as well. So what should be the minimum number of hours we will be investing per day? So if you're following this roadmap, I'll suggest minimum of 2 to 3 hours. If you're doing a revision, then I guess 2 hours are enough. And if you are studying DSA, you want to complete DSA in 1 month, so I will definitely suggest minimum of 2 to 3 hours. Minimum. All right, so next we have traversal based questions. So DFS and BFS like become the integral or important part of your graphs data structure. So like depth first search and your breadth first search. So make sure you are very clear with them. उनको अच्छे से practice कर लेना for both connected as well as disconnected graphs. दोनों के लिए बहुत अच्छे से practice करना है, कि सिर्फ connected का करके छोड़िए नहीं, disconnected graphs के लिए भी practice करना. ठीक है. उसके बाद next we come to कनेक्टेड कंपोनेंट्स. एक क्वेश्चन है जिसमें आप सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल के उसे प्रिंट कराते हो. देन वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड सर्च, की मैट्रिक्स के अंदर हमें वर्ड सर्च करना होता है. देन वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ, वेयर यू आर सपोज्ड टू डिटेक्ट साइकिल है कि नहीं ग्राफ में. देन वी हैव सम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स लाइक बेलमैन फोर्ड, डिजिक्रस एल्गोरिथम, Floyd Warshall. Then you have minimum spanning tree, Prim's algorithm, again इसी के corresponding, and topological sort and graphs and matrix की problems, like again word search उसका part हो जाएगा. So ये सारी चीजें आपको कर लेनी है 2 दिन में, जितना हो मैक्सिमम कर लेना. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर ही लेना. So this is for your day 25 and day 26, in which you're going to do graphs properly. And again I'll say graphs को भी अच्छे से कर लेना, एक important data structure है आपका. All right, so next we have day 27 and day 29, and that is your dynamic programming. Dynamic programming is like one of the most important topics if I talk about, especially for interview purposes. पूछ लेते हैं. My personal experience, one of my interviews was based on dynamic programming. So make sure you study this one properly, because it's a very important and interesting concept as well. But a prerequisite that before you are studying dynamic programming,
मेक श्योर दैट यू रिवाइज रिकर्जन प्रॉपरली, क्योंकि रिकर्जन नहीं अच्छे से आता होगा तो डीपी सॉल्यूशंस नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप रिकर्जन रिवाइज कर लो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, आप डीपी सॉल्यूशंस लिख नहीं पाओगे डायरेक्टली। सो दैट इज वाई मेक श्योर थोड़ा सा रिकर्जन रिवाइज कर लो। सो अब इसमें आपका जो पोर्शन आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, वो कैसे होता है कि आप एक अप्रोच सोचते हो, पहले उसे रिकर्जन में लिखते हो, देन यू परफॉर्म मेमोराइजेशन, दैट इज योर टॉप डाउन अप्रोच, एंड देन यू परफॉर्म टैबुलेशन, जो फाइनल आपका डीपी सॉल्यूशन होता है, दैट इज योर बॉटम अप अप्रोच। सो दिस इज हाउ योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क्स। सो एक एक करके तीनों आपको पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना होता है, फिर आप मेमोराइजेशन लिखते हो जिसमें आप एक लेट्स से आउटपुट एरे, डीपी एरे, कुछ एक्स्ट्रा एरे बना के चलते हो जिसमें आप साथ के साथ अपनी आंसर स्टोर करते रहते हो, एंड इफ इट और यू फाइंड अ सॉल्यूशन तो आप उससे यूज कर लेते हो, नहीं मिलता है तो यू कैलकुलेट द सॉल्यूशन एंड स्टोर इट इन द एरे। एंड टैबुलेशन इज जिसमें आप मतलब रिकर्शन का यूज नहीं कर रहे होते, आप डायरेक्टली एक टेबल बनाते हो और उसमें बॉटम अप अप्रोच है तो स्टार्टिंग से फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी सब प्रॉब्लम्स के लिए आप आंसर निकालते चले जाते हो। सो इसमें सबसे पहले हमको बेसिक प्रॉब्लम्स करनी है, दैट इंक्लूड्स योर फिबोनाची नंबर, स्टेयरकेस प्रॉब्लम, देन वी हैव longest common subsequence, longest increasing subsequence and length of longest common substring. सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, तो आप ये तीनों भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन इनफ है। इन तीनों को अच्छे से कर लेना, तो ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस है फर्दर वो हो जाएंगे बहुत अच्छे से। सो मेक श्योर कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट अच्छे से कर रहे हो। देन वी हैव अ वेरी वो जैसे कहते हैं famous problem, another famous problem is edit distance. I guess I have done this one too in one of my early like pehle ki master classes. I've done this question. So edit distance again an important, उसमें क्या होता है कि दो strings दे रखी होती हैं and you can perform certain operations and you have to uh, check in how many operations, basically minimum आप कितने में एक को दूसरे में convert कर पाओगे। देन हमारे पास होता है मिनिमम कॉस्ट पाथ कि हमें स्टार्ट से एंड तक जाना है, हर एक जगह जाने की एक कॉस्ट है तो हमें मिनिमम कॉस्ट में जाना है, सो हम ऐसा पाथ सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे। देन वी हैव 01 knapsack प्रॉब्लम, अगेन ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, वेट्स दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी हैं आइटम्स का, हमें इस तरीके से डालना है कि वैल्यू मैक्सिमम रहे और उस बैग में फिट भी आ जाए। एंड ये फ्रैक्शनल knapsack नहीं है, इसमें आइटम्स डिवाइड नहीं हो सकती, इसमें आप पूरा ही लोगे आधा आधा करके, या कुछ थोड़ा पोर्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट वी हैव palindrome partitioning. I guess I've done this one too in my life earlier and it's a very important, थोड़ी हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, शायद डिफिकल्ट लगेगी, बहुत काफी अच्छी प्रॉब्लम है। एंड लास्टली वी हैव मैट्रिक्स स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे मैंने सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर दी हैं जो कि आप मतलब इजी लेवल है, मीडियम और हार्ड भी है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आई गेस फॉर यू मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोर और लेस प्रॉब्लम जो है इन्हीं का कुछ वेरिएशन होगी, इन्हीं का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट यही होगा, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होगी बस थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ उसमें काम डिफरेंट तरीके से हो रहा होगा। बट इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज प्रॉब्लम्स it will be good for you, and as you can see I have devoted your 3 days। 3 days इसलिए दिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है, एंड सिंस इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 दिन तो चाहिए, ठीक है। इवन इफ आप सारे क्वेश्चंस नहीं भी कर पाते हो, बस इतना ट्राई करना, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर डूइंग, जस्ट डू देम प्रॉपर्ली। Even if you're not able to do everything, whatever you're doing, do that properly. I have listed here all the problems that I believe are like very important or very commonly asked questions, or commonly people do to understand the concepts of dynamic programming better. So even if you're able to do them in 3 days, well and good. If you're not, just make sure that whatever problem you're doing in those 3 days, you're doing them correctly and you're able to grasp the concept properly. So this was about dynamic programming. Next, we have day 30. So this is the last day of our complete roadmap, and that is your greedy algorithms. So in case of greedy algorithms, these are some of the standard problems that you can do to understand how greedy algorithm works, in which currently you are selecting the best optimal solution. सो उसमें ग्रेडियल algorithm में आपकी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल knapsack अब क्या है, 01 knapsack में क्या होता है, हम पूरी आइटम्स उठा सकते हैं। योर
here आप पूरी items जो है मतलब आप उसको तोड़ भी सकते हो. You can pick the items in bits. You can divide it in bits. So you need not uh, pick a complete item. You can divide it in weights. So fraction knapsack problem, again part of greedy algorithm. Then n meetings in one room. Then gas station, again one of the very famous problems in minimum number of platforms. So yeah, all these problems are some of the conventional, some of the important or standard problems for greedy approach. So you can definitely do them if you're able to do them, if you are doing them while understanding the concept, not just that you are doing these questions and you're learning their approaches, you're mugging them up. No, I'm suggesting these problems that you can practice these, you can understand these, so that you're able to understand the concepts of greedy algorithms better. See, obviously in one day it might be possible, it might not be possible for you to do all of these problems. It's all right even if you're able to do three problems. Just make sure that you're doing them properly. uh, that's what I would like to say for greedy algorithms. So again, for the complete roadmap, I would just like to say that make sure you are doing whatever, like doing whatever you're doing properly. Don't rush into doing many things, because see, in 1 month you basically cannot master DSA completely. But it's just like you, if you have less time, you can at least do something better than what you are currently at, or which position you are currently at. So that is why you can refer all these questions, you can refer the whole roadmap, so that you are able to practice better, you're able to understand the concepts. Okay. So, okay, one question, ma'am. I'm in sixth semester. So, what can I do? Follow this roadmap or give some more time for DSA? I suggest if you have more time, if you have enough time before your session coming up, I will say give, definitely give more time. You can even follow this roadmap. What you can do is, instead of just completely following it day by day, like for example यहाँ पे 3 दिन इसको देने, 2 दिन इसको देने, instead of doing that, you can just revise this whole roadmap according to your limited or your given time. कि मैं instead 3 दिन की बजाय मैं 5 दिन में ये topic कर लूंगा. You can add more problems, but eventually the order, or you can say the DSA, जो basic data structures हैं, this and algorithms हैं, वो यही रहेगी. So you can improvise this roadmap. Again, I am giving this roadmap according to what I feel will be good for you. But still, you can completely improvise it. You feel like I need more time in arrays, you can add another day. You can, extend it to 31 days, or you can, maybe if you feel like that I'll be able to do this basic maths and basics of any programming language in one day, so I can just, shift one day in doing arrays. You can do anything. So this is just a basic roadmap. Be flexible. Don't need to follow it strictly. अपने अकॉर्डिंग रख के चलोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज वही फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत ज्यादा. या डेफिनेटली डोंट वरी, आई विल शेयर द नोट्स. अच्छा, वन मोर थिंग, एक बार कोड स्टूडियो पे भी देख लेते हैं. कुछ चीजें दिखा देती हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो, आपके काम आ जाएगी. Okay, so ma'am, as you've said earlier that it would take 4 to 5 months average to learn a programming language basics in DSA in it. Are college time and exams also considered in it? Yeah. Like, yeah, obviously, because everything going on, minimum of 4 to 5 months it will take. Because obviously, if you have your college as well, you have exams as well, you're not able to give like the same amount of time every day. At times, it might be you're only able to give 1 hour a day. At times, you might be able to give 4 hours a day. So, depending upon that, 4 to 5 months is an average time that I'm saying, Pranal, that you'll be able to dedicate to DSA. So can we do it in Java language or C++ is best? Many of my friends are doing it in C++, but I like Java. You can do it in any language. If you like Java, you can do it in Java. No need to worry. Alright, so एक बार Code Studio पे देख लेते हैं. Alright, so as you can see, यहाँ पे we have a guided path for data structures in algorithm. So you can refer this guided path as well. As you can see, like there are all the modules given, and obviously it's definitely free. Like arrays, strings, multi-dimensional arrays, or 2D arrays, recursion, backtracking, everything that I've discussed in this roadmap. If you have extra time, or if you want to study some notes, or if you want to do any other questions apart from what I have listed,
or even the questions that I've listed, you can definitely refer this guided path. You'll be able to find questions. For example, here only you can see I told you about cadence algorithm and Dutch national flag algorithm. So definitely you can attempt all these here, and like string algorithms, recursion, and backtracking. You can do everything. You'll even find notes here. For example, as you can see, you'll be able to find notes for sorting here, selection sort, bubble sort, merge sort, quick sort, counting sort, everything you can find here. So as you people were asking कि resources कहाँ से करना है, so I'm suggesting that you can refer this guided path. And also लाइक यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप उसे भी रेफर कर सकते हो. इवन वी पीपल आर अपलोडिंग डीएसए इन सी प्लस प्लस का पूरा प्लेलिस्ट, सो यू कैन रेफर दैट एज वेल. वी पीपल आर अपलोडिंग अ वीडियो एवरी डे where we pick a topic and like order me, we are picking the topics from the data structures and algorithms, and we're teaching them in C++. You can refer that as well for your resources. And like here, if your interviews are approaching, so definitely you can read interview experiences, and your interview bundles are also given. I personally like this feature a lot. Like for example, if I want to prepare for Flipkart, so as you can see, we are given complete interview questions here, and there are mock tests as well. Make sure कि इस चीज का काफी यूज करना. मॉक टेस्ट वाला जो चीज है ना, ये अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मॉक टेस्ट्स एंड मॉक इंटरव्यूज प्लीज जरूर देना, बहुत फायदा करेगी आपकी. बिकॉज अगर आपको आदत नहीं है टाइम बाउंडेड स्टडी की, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू स्टडिंग under a timer wala thing, or if you're not used to solving problems under a timer wala thing, so mock tests will help you. And mock interviews as well, अगर आपके interviews approach कर रहे हैं तो वो भी जरूर कर लेना. ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे ना आपको जो क्वेश्चंस का लिस्ट है, मैं एक और चीज दिखा देती हूँ. यू कैन सी हियर स्ट्राइवर का एसडी शीट. इसमें ना स्ट्राइवर का एसडी शीट में इट इज डिवाइडेड बेस्ड लाइक 30 डेज के लिए ये पूरा प्लान है. 30 डेज के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं. यू कैन रेफर दिस एज वेल. पर्सनली आई डू लाइक दिस स्ट्राइवर का एसडी शीट अ लॉट, सो यू कैन डू क्वेश्चंस from here as well, and I'll definitely refer you, or like definitely suggest कि if you're planning to do DSA in 1 month, या रिवाइज डीएसए इन 1 month, यू कैन रेफर स्ट्राइवर का एसडी शीट. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट है. सो डेफिनेटली ये करना है. ठीक है, सो आई गेस आई एम प्रीटी मच डन विद एवरीथिंग. If any more thing left here, no, nothing. All right, so any more questions? I'm open to Q&A. Any questions, guys? General questions, any queries? And don't worry, I'll upload the whole PDF. मैं डाल दूंगी description में डाल दूंगी. So for now, any questions? Don't worry, I'll share the notes. It's okay. So Samir is asking, it's enough topic for campus placements. See, definitely, if you have less time, and definitely all these topics are like some of the important topics, major topics that are asked. At times, some miscellaneous topics that I would like to suggest that you can do is tries, bit manipulation, string algorithms, and number theory में you can do sieve of erratus. So definitely अगर time है तो ये भी कर लेना, नहीं तो एटलीस्ट ट्राइस कर लेना, क्योंकि ट्राइस का क्वेश्चन एक आधा आ जाता है. बाकी ऑल दीज लाइक ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड अभी तक, दे आर काफी इंपॉर्टेंट एंड आ जाते हैं, इन्हीं में से आते हैं. So Shivam Patel is asking, ma'am, how to improve logic? See, I will say for improving logic, na, start with practicing problems on your pen and paper. Instead of having a habit of directly jumping onto your system, just एक बार कोशिश करो कि pen and paper पे approaches लिखना, और dry running a code on pen and paper. When you will do things like that, it will help you a lot. And also like divide and conquer approach भी होती है कि आप उस कोड को स्टेप्स में या अप्रोच को स्टेप्स में डिवाइड करके उसके पार्ट्स के लिए कोड्स लिख सकते हो on and pen and paper again, and then you can integrate it. So yeah, for logic,
I'll say that. And one of the most important things, if you feel like you're not able to build logic, क्योंकि मुझे भी लगता था beginning में, उसके लिए I'll just suggest keep going. Even if it gets frustrating now, keep going, keep practicing daily. After one point of time, you yourself will realize कि हाँ, अब समझ आ रहा है, अब चीजें अच्छे से हो रही हैं, logic building better हो गई. So I hope I've answered your question. Okay, so Naman is saying I can't solve questions by myself. See, if you're beginning and this is happening, I'll say it's pretty normal. Just wait for a while, just have patience, keep practicing, don't stop. After a while, you'll be able to solve questions. And if you've come midway, like you are studying DSA, पढ़ रहे हो बीच में आ चुके, but still अभी भी questions हो ही नहीं पा रहे, तो I'll just suggest कि I'll say कि maybe your basics are weak. Work upon your basics. जो छोटी सी चीजें जैसे implementation वाली चीज हो जाती है, if I talk about stacks, उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टैक्स का वो चीजें पढ़ना. सो थिंग्स लाइक दिस, मेक श्योर कि आपके बेसिक्स क्लियर है, बेसिक से दोबारा स्टार्ट कर लो. जो चीज नहीं हो रही है उससे दोबारा स्टार्ट कर लो, बिकॉज अदरवाइज आप इसी में आगे बढ़ते रहोगे कि क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, यू स्टिल ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. नहीं होगा. बेसिक्स अच्छे से कर लो एंड देन you'll be able to do them, and obviously it takes time. Yeah, give yourself time, don't worry about it. Next, any more questions, guys? Am I audible? Okay. Share my LinkedIn profile by my name itself, Tripti Chaudhary. You can find it. Will experience matter? In what terms are you asking? I am starting arrays but enables to start question what to do. So Rishabh has asked this question. You're just starting with arrays, Rishabh. Don't worry, you will be able to do questions after a while. Just keep practicing. If at all you feel like you're doing arrays but you're still stuck, so I'll just say keep on doing the questions that you've previously done. Keep on revising them after a while. Like for example, आपने एक question आज किया है, उसको 2-3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करना, खुद से ट्राई करना. बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन, उससे खुद से ट्राई करना. एटलीस्ट 1-2 घंटा, 1 घंटा उसे देना बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन. सो इस तरीके से आप जब करोगे तो you'll be able to do it better. ठीक है, तो उसको धीरे धीरे करके करते रहो, हो जाएगा. डोंट वरी, यू आर स्टार्टिंग विद arrays only. It's not that difficult. हो जाता है, नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व. I guess when I was practicing arrays, it was difficult for me as well at times to build logic. I was not able to actually write codes for what I was thinking. Okay. Okay. We are preparing under the academic point of view. Could you please suggest any way to get placed in to get the job at Amazon or Google? I can understand the question, but I'm unable to. So Yagneshwar, I guess you're asking question regarding how to prepare for particular companies if you're planning to get a job at a particular company. So I will suggest you start first of all. You're unable to code. So if there are two queries basically, you're unable to make code from logic, and then you want to prepare for particular companies. So for code to logic, I'll just say कि उस time पे when you're trying to build your logic, you're trying to accomplish that logic building वाला चीज, उस time पे इतना focus मत करो कि हाँ मुझे Google के लिए Amazon के लिए prepare करना है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. तो definitely नहीं होगा. When you're doing something, just focus upon that. उसके रिगार्डिंग बेसिक्स करने पड़े, बेसिक्स करो. ये आप सोचोगे कि गूगल निकालनी है और बेसिक्स भी नहीं हो रही है, अब मैं बेसिक क्वेश्चंस क्यों करूं, मैं तो सीधे डायरेक्टली हार्ड ही करूंगी या हार्ड ही करूंगा. ये सब चीजें नहीं सोचनी. When you are trying to do problems, make sure you are focusing on that as well. Even if you have to do easy level problems बार बार, it's okay. Make sure आपके बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि at the end जो आपका 3-4 महीने के बाद का रिजल्ट होगा, that will matter. And after you are like confident enough कि आप लॉजिक बिल्डिंग कर पा रहे हो, then I guess मैंने यहीं पे दिखाया था, यहाँ पे इंटरव्यू बंडल्स है पर्टिकुलर कंपनीज के लिए. तो वहाँ पे आप डिफरेंट कंपनी, जो भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना स्टार्ट कर दो. आई एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाओगे, सिर्फ डीएसए पढ़ के चले जाओगे, उससे
थोड़ा आप लेस कॉन्फिडेंट रहोगे, बट आपको पता रहता है ना कि किस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट. Can mechanical student do it and crack software placement? Yeah, definitely. It's all about your efforts and your skills. At the end, that matters. So, Hiralal is asking, is competitive programming necessary for getting placed in companies, or just TSA is enough? Okay, I'll just say, see, competitive programming is not like a necessity which is asked there कि do you do like have you done competitive programming, क्या आपको आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, but it gives you an edge because competitive programming में जैसे वो कहानी टाइप के questions आते हैं ना जो contest में, आपके इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स में वैसे questions होते हैं. सो आपको थोड़ी सी आदत होती है तो आपके लिए easy रहता है उन्हें solve करना, आपको एकदम से देख के डर नहीं लगता. So in that case, I'll say कि if you have done competitive programming, मतलब आपको practice भी है ना थोड़ी बहुत contest देने की, so it will give you an edge because you'll be able to solve questions थोड़ा सा better. And उसके अलावा it's not like a necessary, and obviously if you're participating in contests and if you get good ranks for something and like achievements है आपकी, तो आपके resume में achievements के section में it can reflect you as a good candidate. So that's how it is helpful. It's not like a necessity, but it's definitely an like advantage. Okay. Are only singly linked list questions enough from linked list topic? See, if you are, if I'll again say the same thing, if you have enough time, do practice at least 2 or 3 questions of the other topics, like doubly linked list and stuff. Do practice for that as well. But if you are thorough with singly linked list, it's enough. But still, you should know something about the other topics as well so that you don't get panicked when a question comes in front of you of that particular topic. But you don't need to emphasize a lot on that. Is DSA in Python language can we start? Kishan, are you trying to ask if you can start Python DSA with Python? Yeah, I mean, you can do that definitely. Pick any language and start DSA in it. Not an issue. It's according to you. मैम 8 सेम खत्म होने वाला है और 1.5 मंथ बचा है. इनफ है मैम तक कंपनी क्रैक करने के लिए. या मतलब I'll just say one thing because 1.5 months बचा है तो obviously the people who have started earlier उनकी practice better होगी, but still you can फिर भी do a lot more than doing nothing. So 1.5 months में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, if you are able to catch up, if you're able to do properly, so yeah, you can do that. Like करने से पहले ही डिसहार्टेंड नहीं होना है कि 1.5 महीना बचा है. एटलीस्ट स्टार्ट करो, 1.5 महीने के बाद का रिजल्ट है वो 1.5 महीने के बाद देखना. For now, just don't waste your 1.5 months in regretting or getting panicked. That's all I will say, because at least you'll be able to do a lot more than what you're currently doing if you're not doing anything and just panicking. I hope I've answered your question, Deep. Okay, any other question? So as we are doing C++ language, then which topics should be covered well for data structures? I mean, yeah, I told you basic. If you know about loops, conditional statements, and ranges, like what are the data types in their ranges, because in questions need to take care of like if the limit is getting exceeded or not. So like these basic things are enough for you to start with data structures. And obviously pattern problems, not like pattern problems for koi user, but it just helps you to understand loops better, the functioning of loops better. I hope I've answered your query, Samir. Okay. There are a lot of questions. Question sheet basically. I'll provide the link to this as well. Don't worry. In which company are you working? I'm an upcoming SD at Microsoft. Is this 30 days roadmap enough?
Yeah, I mean, it is this roadmap is basically there to cover most of the things in 30 days, and obviously it depends upon you as well. If you have some more time, you can practice more questions. So Prayag is saying, ma'am, I face too much difficulty in making logic. I'm from electronics branch. Yeah, it's all right. I mean, even if it's happening, just remember it's a very normal thing. I mean, you can see for yourself, in the chat itself, there are a lot of other people as well who are facing this problem. I myself face this, so don't need to worry. It's just try to find out your weak points. That if you feel like you're not able to do, let's say, array questions, so just try and do the easy level questions again and again. There's no harm in doing a thing again and again until you have done it properly, until you have grasped the concepts properly. You'll be able to do it. Don't worry. मैम ओएस करना जरूरी है कंपनीज के लिए या दिस थिंग आई विल डेफिनेटली से सिर्फ डीएसए पे मत फोकस करना अपनी रेज्यूमे बिल्डिंग जो है आपका आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज रखना एंड कोर सब्जेक्ट्स जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं उसको भी पढ़ लेना आई गेस यहाँ पे गाइडेड पाथ थे हाँ ये एप्टीट्यूड भी पढ़ लेना है और एप्टीट्यूड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग राउंड्स में ना आपके काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं एप्टीट्यूड के एंड ओएस का भी ट्रैक पे रखा है एंड हियर इज योर डीबीएमएस इज वेल देन oops in C++, Java, Python, any language that you're preparing. Computer networks, again, an important topic. System design, an important topic. And do practice some puzzles as well. So more or less, आपको इसमें guided paths दे ही रखे हैं. So yeah, I'll definitely say कि core subjects आपका like operating system हो गया, and you have computer networks, system design, and yeah, oops as well. So like core subjects जो हैं आपकी उनको definitely करके जाना, छोड़ के मत जाना. क्योंकि बच्चों का एट टाइम्स जो इंटरव्यू है वो रह इसलिए जाता है बिकॉज उनको कोर सब्जेक्ट्स नहीं आते थे मैम प्लेसमेंट के लिए डीएसए किस लैंग्वेज से करें एनी लैंग्वेज यू कैन पिक जो भी आपको कंफर्टेबल लगे सी प्लस प्लस करनी है वो कर लो पाइथन करनी है जावा करनी है जो करनी है कर लो लैंग्वेज डजंट मैटर डीएसए अच्छे से आना चाहिए व्हाट वी डू इन फर्स्ट ईयर लाइक फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो भी बना रखी है चैनल पे डेलीवेट वाज माय वीडियो ओनली where I have discussed like what all should you do if you're in your first year. Okay, there are a lot of questions. In how much time theory subjects can be done? Yeah, I'll just say that जैसे if it all अभी placement session आने वाला है, so आप मतलब हो जाएगा डेली प्रैक्टिस कर लो आप लगातार करने जाओ तो यार लोग एक रात पहले भी कर देते हैं बट आई जस्ट से कि डेली प्रैक्टिस की आदत डाल लो कि जब तक आपका फाइनल प्लेसमेंट सेशन नहीं आता है जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थोड़ा थोड़ा डेली कि थोड़ा थोड़ा 1 घंटा सब्जेक्ट का डेली पढ़ लिया दिस वे यू विल बी एबल टू डू इट Okay, there are a lot of questions. Just a minute. Can I also learn app or web development properly in 30 days? Yeah, you can. And I guess there will be a lot of roadmaps coming for development as well on our YouTube channel, Coding Ninjas YouTube channel. So make sure you are aware of it. DSA sheet would be sufficient. Yeah, and even I told you, you can refer to Striver's DSA sheet. It's there in Code Studio as well. Okay. I will share PDF, don't worry. ऑनलाइन असेसमेंट में कंपनी टफ क्वेश्चंस क्यों सेट करती है प्लीज बताओ उस तरह के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें सी वो जो असेसमेंट होता है आपको उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप पूरा सॉल्व कर दो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्व नहीं करा तो चांसेस नहीं है बिल्कुल भी दे बेसिकली सी द मेथड द वे यू आर सॉल्विंग और अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम एंड उसके लिए यार प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस या कंपनी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है ना प्रीवियसली आस्क्ड है उनको ही कर लो बेस्ट रहता है आपको थोड़ा लेवल पता चल जाएगा anyways guys we are thoda sa out of time now I guess yeah
So this was about for today. I hope you liked the session, and I will definitely share the PDF. Don't worry. For now, this was about the session, and even if you have less days remaining before your final thing coming up, final session coming up, just जितना टाइम बचा ना उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना इंस्टेड ऑफ सिटिंग और क्राइंग और पैनिकिंग कि कुछ नहीं हुआ. Just try to do as much as you can, and definitely focus on your core subjects as well and other things like projects as well, and practice DSA daily, and it will be helpful at the end. All right, so thank you so much everyone. That's it from my side.